ગાંધીનગર સ્થિત નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ફેશન ટેકનોલોજીના વિશાળ હોલમાં વિકસિત ભારતના શિલ્પી એવા યુવાનોને સંબોધવા મેજર જનરલ ગૌરવ બગ્ગા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ગાંધીનગર સ્થિત નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ફેશન ટેકનોલોજીના વિશાળ હોલમાં વિકસિત ભારતના શિલ્પી એવા યુવાનોને સંબોધવા મેજર જનરલ ગૌરવ બગ્ગા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। મેજર જનરલ ગૌરવ બગ્ગા જેઓ ભારતીય સેનાની 11 ઇન્ફેન્ટ્રી ગોલ્ડન કટાર ડિવિઝન સાથે જોડાયેલા છે। તેમણે પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા બાદ ભારતીય જવાનોએ હાથ ધરેલા ઓપરેશન સિંદૂર અંગે વિશેષ માહિતી આપી હતી। તેમણે જણાવ્યું હતું કે હાલના સમયમાં સુરક્ષા અને વિકાસ વચ્ચેનું સંતુલન જ સૌથી મહત્વનું છે। ભારત સરકારે આતંકવાદી સ્થળો પર કાર્યવાહી કરીને પાકિસ્તાન સરકારને સ્પષ્ટ સંદેશો આપ્યો હતો કે ભારત પોતાની સુરક્ષા બાબતે કોઈ સમાધાન નહીં કરે। મેજર જનરલે જણાવ્યું હતું કે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ચાલી રહેલી પ્રવૃત્તિઓનો યોગ્ય અને તબક્કાવાર જવાબ આપીને ઓપરેશન સિંદૂર હજી પણ સફળતાપૂર્વક આગળ વધી રહ્યું છે। That Op Sindoor is still on. खत्म नहीं हुई है कहानी। वो एक पिक्चर में था ना, पिक्चर क्या कहानी क्या पिक्चर अभी बाकी है। So we are looking and waiting for that बाकी वाली पिक्चर because ये अभी ट्रेलर ही आया है। And Op Sindoor is important for all of us क्योंकि we all have lived through and each one of us has seen Op Sindoor जो उसके मोबाइल पे दिखा उसको, और हर मोबाइल पे ज़रूरी नहीं है कि आपने सेम चीज़ देखी हो। Each one, if I ask you here, will tell me a different story of how you perceive Op Sindoor. So Op Sindoor was not fought on the battlefield. It was fought in your and my mind. लड़ाई इधर की थी और जीत और हार इधर हुई, क्योंकि ग्राउंड पे तो हमने प्रूव कर दिया पिक्चर दिखा दिखा के कि पाकिस्तान ने जब मुंह खोला उसको एक प्रसाद दिया गया। बट लड़ाई तो 4 दिन की ख़त्म हो गई और नेक्स्ट फेज़ की हम तैयारी कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब आएगा। बट ईच वन ऑफ यू, ईच इंडियन, ईच citizen of this world who is interested in this part of the world has decided who won and who lost. And I am standing here to break that myth, to tell you the truth कि ये हुआ। तो इस टॉक के बाद जब आप जाएंगे घर तो आप सब ज्ञानी बन चुके होंगे, क्योंकि आप वो स्टोरी लेके जाओगे जो ग्राउंड पे हुई, और बहुत लोगों को सही स्टोरी पता होगी। It will reaffirm your faith in what you know. बहुत लोगों को कहानी सुनेगी, यार कहानी तो मैंने कुछ और सुनी। Very soon we would be becoming the 3rd largest economy in the world by surpassing Germany. And without the contribution of our armed forces, this would not have been ever possible, because the contribution of our armed forces is beyond any comparison. हमारी आर्म्ड फोर्सेस के साथ की जो कंट्रीब्यूशन है, वी ऑल एज ए नेशन वी आर ऑल सेट टू बिकम ए विकसित भारत बाय 2047। बाय 2047 वी एस्पायर टू ए विकसित भारत। एंड विकसित भारत के हमारे प्रधानमंत्री जी ने 4 पिलर्स के वर्णन किया है। 4 पिलर्स वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट इन मेकिंग इंडिया विकसित भारत बाय 2047। फर्स्टली ही हैज मेंशन्ड यूथ, वुमेन एंड देन फार्मर्स एंड पुअर। I am very fortunate that I am addressing 2 pillars of this Viksit Bharat today, youth and the women I am addressing today. But at the same time, I would like to make a very informed decision, and I would like to make a very informed statement that without the contribution of our armed forces, we would never realize the dream of making India a Viksit Bharat by 2047. हमारे आर्म्ड फोर्सेस का इतना बड़ा योगदान है जो हमारे को एक सम्मान भी देता है, हमारे को कॉन्फिडेंस देता है, और जिस दिशा से हमारा देश इस वक्त चल रहा है, एवरीबडी इज लुकिंग एट आवर कंट्री राइट नाउ, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेज। जिस पीस के साथ हम रह रहे हैं, जिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ हमारी कंट्री इस वक्त चल रही है, बहुत बड़ा योगदान है उसमें हमारे आर्म्ड फोर्सेज का। वी शुड नेवर एंड एवर फॉरगेट टू हैव द कंट्रीब्यूशन
of our Indian Armed Forces, and we are really grateful that Major General Gaurav Bagga sir has physically present here. He is physically present here, and he will basically tell us about the operation, in 3 cases of Operation Sindoor. And now we would like to welcome Major General Gaurav Bagga sir with a round of applause. विवेक सिंह, जनादेश न्यूज।